सर मिशन क्रिटिकल को जो छुट्टी थोड़ा डॉक्टर्स कम्युनिटी कुछ अब्रॉड में काम करते हैं, कुछ इंडिया में काम करते हैं, वो मिलकर मिशन क्रिटिकल के नाम पर 1947 तक देश में जो कोरोना का जैसा अगर पैंडेमिक इश्यूज कोई अगर हम फेस करना, कैसा फेस करना चाहिए, कैसे पूरा व्यवस्था को निर्माण करना चाहिए, इसके लिए जो एक कमिटमेंट के साथ काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस इस छोटा सा इनिशिएशन लिया है। क्योंकि कोरोना में भारत हम फेस किया है, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, और ऐसी हमारा समय देश में अभी भी गरीबी है, बेड्स कम है, डॉक्टर्स कम है। इसी समय पर हम जो भी पैंडेमिक आने वाले दिन में नहीं आना चाहिए, अगर आए तो कैसे इसको फेस करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन तैयार करने के लिए जो प्रयास करें। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पूरा तैयार कर रहे। हम MBBS डॉक्टर सीट्स बढ़ाया, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा किया है, और PG सीट्स बढ़ाया, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ा रहे, और फार्मा कंपनीज को हम इंकरेजमेंट दे रहे। रिसर्च में आज फार्मा दुनिया में अच्छे पोजीशन में है, और वैक्सीन में भी, अब वैक्सीन प्रोडक्शन में भी दुनिया का एक डेस्टिनेशन भारत है। आने वाले दिन में आज हम एक PLI स्कीम लाए हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी PLI स्कीम लाए हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स हम विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिन में स्लोली हम खुद आत्मनिर्भरता पर हम जितने भी हॉस्पिटल्स है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मेडिकल संबंधित भारत में तैयार करना चाहिए। ऐसी हम अलग अलग इश्यूज पर भारत तैयार करें। जब आपको मालूम है, जब कोरोना का समय इवन N95 मास्क, PP किट्स भी हम इंपोर्ट करते थे, मगर कोरोना समय पे एक अपॉर्चुनिटी लेकर, एक चैलेंज से हम इंपोर्ट से कोई देश देने को तैयार नहीं था, कोई देश के उनका खुद के लिए शॉर्टेज था। वैसे समय पे हम सेल्फ सफिशिएंट बनकर भारत में मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के प्रयास के कारण देश के रहने वाले डॉक्टर्स हो, देश में रहने वाले इंडस्ट्रीज हो, वर्कर्स हो, उनका सैक्रिफाइस के कारण, उनका साहस के कारण जो भी इक्विपमेंट्स उस समय पे बनाया, देश में करोड़ों करोड़ों लोगों को जान बचाने के लिए सब मिलकर हम प्रयास किया है। वैसे ही आने वाले दिन में एक 2047 तक हेल्थ सेक्टर में भी पूरा सफिशिएंट रहना चाहिए। जो भी पैंडेमिक इश्यूज अगर भारत में आए तो उसके लिए जो लोग प्रयास करें, मैं डॉक्टर्स को पूरा अभिनंदन करना चाहता हूँ। जी सर, आपका नाम सर? सबसे मेरा नाम है अश्विन नायक। आई एम वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ मिशन ICU। सर, ये मिशन ICU क्या है, थोड़ा और इसके बारे में बताएं, और ये क्रिटिकल मिशन के बारे में थोड़ा। सो मिशन ICU ये कोविड-19 के जो सेकेंड वेव हुआ था उसमें शुरू किया था। इट इज़ ए वॉलंटियर रन इनिशिएटिव। मेन एजेंडा ये है कि अभी फ्यूचर में कभी भी पैंडेमिक हो इंडिया में और कहीं पे भी, तो कैपेसिटी कैसे इम्प्रूव की जाए ताकि जो भी पैंडेमिक हो उसमें लोगों को ICU ढूंढते हुए घूमना ना पड़े, भागना ना पड़े। तो ये पूरा प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड हैव कम टुगेदर, एंड इसमें कुछ लोग US से हैं, कुछ लोग इंडिया से हैं। हम सब लोग मिलके इनिशिएटिव चला रहे हैं। इसमें 3 चीज़ें करते हैं हम। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है, जो रिमोट एरियाज में है, उनकी जो ICU कैपेसिटी है उसको कैसे हम बढ़ाएं, इक्विपमेंट से बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी से बढ़ाएं, वो सब। सेकंड है कि जब हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे वहाँ पे क्या स्किल सेट चाहिए, क्या प्रोफेशनल्स चाहिए, उनको कैसे हम सपोर्ट करें। और तीसरा, हम ये जो रेडीनेस कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आए, उनका सुझाव लें और एक रोड मैप बनाएं फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। वो रोड मैप को हम गवर्नमेंट के सामने रखें, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स के सामने रखें, ताकि इंडिया में जो भी नेक्स्ट 20 ईयर्स में होना है फॉर क्रिएटिंग द कैपेसिटी फॉर ICUs, वो हम सपोर्ट कर सकें। ये उसका इंटेंशन है। जी सर, व्हाट्स योर नेम? My name is Krishna Kattapalli.
co-founder of Compassionate Patient Response. We are a US-based NGO. We've been doing these critical care projects for about 4 years now. We've done over 10 projects in Andhra, Telangana, Pune. We have saved over 5,000 lives over the last 4 years. This has been a really humbling and rewarding journey, touching lives. To today's event, we have come together with Mission ICU, an organization, volunteer-based organization just like ourselves, who's very interested in doing this work. We are collaborating to bring this event and partnering with hospitals, physicians, and CSRs to scale this to the next level. We're honored having all these people, including Honorable Minister Kishan Reddy, and look forward to a productive event. Thank you for coming here. सर दोबारा सर जी जी सर Yeah, just done. I'm Dr. Satya Garmala. I'm from Louisville, Kentucky, but very much grew up in Hyderabad. I went from Osmania Medical College. Currently, I practice cardiac electrophysiology. मैं और Krishna ji, we started this foundation 4 years ago. We are very happy to announce that we have touched more than 5,000 lives in different states by partnering with ethical people. We base our principles of compassion, diligence, integrity, and sustainability to carry on our work. We want to do this, carry on this torch, and we joined with Mission ICU. And we are really happy that so many people came up and listened to our pitch. And we're hoping that we can get all this coordinated and do some more positive work to coming up in the years. Thank you. सर फर्स्टली सर आपका नेम सर Sorry? आपका नेम फर्स्टली This is Manoj Shah, a co-founder of Mission ICU. सर what is the mission critical about this? Tell about this. So Mission Critical is basically, it's a community which is coming together to envisioning how the pandemic resilient India could be by 2047. So, like how our Prime Minister Modi ji is talking about how we have to become a Viksit Bharat and independent Bharat, by 2047 when we celebrate 100 years of independence of India. I think this is a very unique event, where we are putting up a strategy document as to if pandemic hits us again, how we should be as an India should be pandemic prepared India, right? So we don't face the same challenges as we faced in the first 2 phases of pandemic. Okay, so here we have invited doctors, medical fraternities, CSR professionals, political leaders, to kind of engage into a dialogue and basically learn and co-create the mechanism in which we will be able to create a resilient India by putting up the healthcare infrastructure, and mainly CPR and Mission ICU is working towards the critical care infrastructure, that is ICU beds and providing them. So till now together we have done about 400 beds in 14 different states, and this has been our endeavor to say how do we kind of become a resilient. But when we started capacitating this beds into the rural India, we found that there was so much divide. There was a lot of difference between the urban and the rural infrastructure, medical infrastructure facility. So though we started as a pandemic issues and solving the pandemic era, but as we progressed, we are pivoting into how we can basically bridge the urban-rural divide in terms of the critical care infrastructure. And I think Mission Critical is the first conference of these kind where we are bringing all these participants, the CSR heads, the hospital authorities, the political functionaries together to create a kind of a pandemic resilient India by 2047, and mainly what we can do in the next 5 years, that is by 2030.